In Delhi's Legislative Assembly, an exhibition brought alive the legacy of Vittal Bhai Patel through a unique showcase of rare archival documents, photographs and AI-generated images. Hosted on the historic lawns of the Assembly Complex, the exhibition traced the building's journey from its days as the seat of the British Raj to its role as a cornerstone of Indian democracy. Vittal Bhai J. Patel, elder brother of Sardar Vallabhbhai Patel and a prominent nationalist leader, was elected President of the Central Legislative Assembly, the equivalent of today's Speaker, in August 1925. The exhibition paid tribute to his contributions to India's parliamentary traditions, his role in the freedom struggle, and his enduring legacy in shaping democratic institutions. 100 वर्ष पहले जब श्री विट्ठल भाई पटेल ने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो यह केवल एक पद ग्रहण नहीं था, यह एक वादा था कि ब्रिटिश सरकार से उभरता भारत का तर्क, कानून, निष्पक्षता और सबसे बढ़कर अपने नागरिकों तथा स्वतंत्रता संग्राम को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर शासन करेगा। उन्होंने अध्यक्ष की भूमिका को दलगत सीमाओं और क्षणिक प्रशंसा से ऊपर उठाकर निष्पक्षता और गरिमा का जीवंत प्रतीक बना दिया था। A special immersive zone was the highlight of the event, where archival black and white photographs blended with AI-generated visuals to recreate historic moments. Visitors experienced moving AI depictions of Patel's election and his assumption of office as President of the Assembly. Patel is credited with laying the foundation of the Speaker's role, upholding neutrality and inclusivity in the parliamentary process. जब विट्ठल भाई पटेल ने अध्यक्ष पद की शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहले उद्घोष किया, आई बिलोंग टू नो पार्टी, आई बिलोंग टू ऑल पार्टीज। इस एक वाक्य ने अध्यक्ष के संवैधानिक कर्तव्य को स्पष्ट परिभाषा दी कि हर आवाज, चाहे वह बहुमत की हो या अल्पमत की, सादर सम्मान आदर से सुनी जाए, नियम निर्भय होकर निष्पक्षता से लागू हो और बहस व्यवस्था का माध्यम बने, अव्यवस्था का नहीं। Alongside archival photographs of Patel, his New Delhi residence and documents from his tenure as Speaker of the Legislative Assembly, the exhibition also featured rare images presented through digital displays. This fusion of archives and AI created a unique storytelling experience, blending history with futuristic innovation.